Dear students, Assalamu alaikum. As you know that we have almost completed the topic on diseases. So today we are going to take all these diseases briefly, their causative organism and their mode of spread. And then we will move to another topic. First, we will take disease. The name of that disease is malaria. जो मलेरिया डिजीज होती है इसमें आपको याद रखना है इट इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ये एक प्रोटोजोआ है जो जिससे ये डिजीज होती है। इसी तरह और एक बीमारी है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा डिजीज होती है इट इज a viral disease which is caused by mysovirus influenza. इसी तरह और एक डिजीज है उसका नाम है हेपेटाइटिस। ये भी हमने पहले अच्छी तरह से पढ़ा है। हेपेटाइटिस दिस इज आल्सो कॉल्ड जूंडाइस एंड इट इज caused by हेपेटाइटिस वायरस। ये याद रखना किससे ये होती है, विच ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीजेस। इसी तरह और एक बीमारी हमने पढ़ी थी रेबीज। जो रेबीज डिजीज है दैट इज काज्ड बाय रेबीज वायरस। ये रेबीज वायरस से होता है। नेक्स्ट डिजीज हमने पढ़ी थी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो एड्स डिजीज है it is caused by a virus. The name of that virus is HIV, human immunodeficiency virus. इसी तरह और एक बीमारी हमने पढ़ी that is called polio is caused by it is a viral disease which is caused by a polio virus. It is caused by a polio virus. और एक डिजीज के बारे में हमने पढ़ा that is tuberculosis डिजीज जो होती है दैट इज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलोसिस। नेक्स्ट डिजीज, अगर हम नेक्स्ट डिजीज के बारे में देखेंगे दैट इज कॉलरा। जो कॉलरा है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज विच इज काज्ड बाय विब्रियो कॉलरा। ये कॉलरा डिजीज जो होते हैं इट इज काज्ड बाय विब्रियो कॉलरा। इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट डिजीज दैट इज टाइफाइड। जो टाइफाइड होती है इट इज काज्ड बाय सल्मोनेला टाइफी। इसी तरह और एक बीमारी है दैट इज एंथ्रेक्स। इट इज काज्ड बाय Bacillus anthracis. So these are the various diseases which are caused by various organisms. For example, पहली disease that is malaria. जो malaria disease होती है it is caused by a protozoan. The name of that protozoa is plasmodium से ये बीमारी होती है and the carrier of this plasmodium is female Anopheles mosquito. Is the carrier of this disease. So malaria it is caused by a plasmodium and this plasmodium the vector of this disease is female Anopheles mosquito. इसी तरह और एक बीमारी है दैट इज इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा होती है that is caused by mysovirus influenza. It is a viral disease which is caused by mysovirus influenza. It is also called flu. Sometimes it is also called flu. और ये कैसे
ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन प्लेस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. जब इन्फेक्टेड पर्सन it gets transmitted from infected person to healthy person by when the infected person makes sneezing, cough, etc. Then the healthy person breathes these droplets and he gets this influenza disease. So influenza, it is caused by mysovirus influenza. Now coming towards the hepatitis. Hepatitis, it is caused by hepatitis virus. It is a disease of liver. And this disease gets transmitted from infected person to healthy person by contaminated food and water. Now coming towards the rabies, which is also called hydrophobia. This is also called hydrophobia. जो ये हाइड्रोफोबिया पानी, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स फियर, पानी का डर रहता है इस पेशेंट को जिसमें रेबीज डिजीज होगी. दिस डिजीज इज काज्ड बाय मेड डॉग जो होता है, मेड मंकी, इसी तरह मेड रैबिट etc. Mostly this is caused by this mad dog is a main agent of this disease. Now coming next disease, that is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. This is caused by the HIV, human immunodeficiency virus. It is a viral disease, and this disease is also called sexually transmitted disease. This is a sexually transmitted disease. This disease mostly gets transmitted from infected person to healthy person by making the illegal sexual contact. Also, this disease separates by using the infected needles, blood transfusion, etc. This is the main cause of this disease. Now, coming towards the polio virus. It is caused by polio virus, and the main agent of this disease is contaminated food and water. The food which contains this polio virus, when we get this food or this water which contains this polio virus, we get this polio disease. So next disease is tuberculosis जो होते हैं, it is caused by Mycobacterium tuberculosis. It is a bacterial disease, and this tuberculosis was discovered by Robert Koch. Robert Koch ने इसको डिस्कवर किया, KOCH. Robert Koch discovered this disease. Next is cholera. Cholera is caused by Vibrio cholera. It is also a bacterial disease. It is a waterborne disease. Mostly this disease happens after floods or where there is a gathering of people. This disease happens. Now coming towards the typhoid. Typhoid is caused by Salmonella typhi. This disease mostly spreads by sneezing, coughing of infected person. इसी तरह और एक डिजीज है, दैट इज एंथ्रैक्स इज caused by Bacillus anthracis. Mostly this disease is found in animals, pet animals. For example, this is found in cow, sheep, goat, and this gets transmitted from these animals to human beings. When these animals get infected, this disease gets transmitted from these infected animals to humans. So this was all about the diseases. Now here I will take some points before starting the next topic. That is, there is a disease that is known as anemia. जो ये एनीमिया डिजीज होती है, इट इज अ कंडीशन
इज, ये एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, इट इज ए कंडीशन इन विच देयर इज deficiency of hemoglobin in our blood. अगर आप देखोगे जो हीमोग्लोबिन होता है, इट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स. ये किन में होता है? इट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. देयर इज नो न्यूक्लियस इन रेड ब्लड सेल्स. व्हाई? बिकॉज दे कंटेन्स अ प्रोटीन, द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज हीमोग्लोबिन. उनमें हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता है. द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज टेक्स ऑक्सीजन from the lungs up to the cells for respiration, and also it takes carbon dioxide from the cells. Mostly the carbon dioxide travels through the water fluid present in the blood, but the main function of hemoglobin, it takes oxygen from the lungs and reaches it and takes it up to the cells by respiration happens. Number 1, hemoglobin, it is an iron containing pigment. इसमें क्या होता है? इसमें एक एलिमेंट होता है, दैट इज आयरन. इट कंटेन्स आयरन. सो जो ये एनीमिया डिजीज होती है, इसमें क्या होता है? अगर हम देखेंगे नॉर्मल मेल, अगर हम मेल की बात करेंगे, एक मेल में होते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है 13 to 18 grams पर डेसीलीटर मेल में हीमोग्लोबिन होता है. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन मेल. और अगर हम फीमेल की बात करेंगे, इट कंटेन्स 11.5 to 15 grams पर डेसीलीटर. तो मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज 13 to 18 grams पर डेसीलीटर. मगर अगर हम फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज 11.5 to 15 grams पर डेसीलीटर. तो जिस इंसान में ये एनीमिया डिजीज होते हैं उसमें क्या होता है, जो ये हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है दैट डिक्रीजेस, दैट फॉल्स डाउन, 13 से कम होती है. इसी तरह फीमेल में भी ये डाउन होती है, 11 से कम होती है ये डिजीज. तो उस पेशेंट में एनीमिया डिजीज होती है और ब्लड जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज नॉट कैपेबल टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स अप टू द सेल्स. इसी तरह हम यहाँ पर और एक टर्म देखेंगे दैट इज कंजेनाइटल डिजीज. कंजेनाइटल डिजीज, जो कंजेनाइटल डिजीज होती है, दिस डिजीज इज डिजीज प्रेजेंट सिंस बर्थ, उसको कहते हैं कंजेनिटल डिजीज. जो ये डिजीज होते हैं ये फ्रॉम बर्थ से होते हैं. मोस्टली दिस डिजीज इज ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज. जो इंसान में जीन्स होते हैं उनमें कुछ वेरिएशन आती है, कुछ चेंजेस आती हैं, या डेफिशिएंसी ऑफ एनी जीन या एक्स्ट्रा जीन होता है कई क्रोमोसोम्स पे, तो इंसान में बीमारी आती है फ्रॉम बर्थ. तो उसको कहते हैं कंजेनिटल डिजीज प्रेजेंट सिंस बर्थ. इसी तरह और एक टर्म आती है दैट इज एक्वायर्ड डिजीज. जो एक्वायर्ड डिजीज होते हैं, दिस disease separates आफ्टर बर्थ. जो कंजेनाइटल डिजीज थी वो बिफोर बर्थ थी. तो ये डिजीज होते हैं एक्वायर्ड डिजीज, दिस डिजीज सेपरेट्स आफ्टर बर्थ. फॉर एग्जांपल एड्स. So this was all about today.
Hope you will get some benefit from these topics. Inshallah, I will be back tomorrow. Till then, Khuda Hafiz.